Hello, dear shining stars. How are you all? I hope you all are doing good and in good health too. So, are you all ready to start a new chapter of your social science with your mentor, Rajita? So, children, here we start the 13th chapter of our social science class 6, culture and science. So, let's see what's there in this चैप्टर. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लिटरेचर, संगम लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, then science and technology. Fine, children? So here we start with literature. Indian literature is the oldest literature in the world. जो इंडिया का लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर जो है वो सबसे पुराना लिटरेचर है पूरे वर्ल्ड में. It is partly religious and partly secular. कुछ तो उसमें religious है literature और कुछ literature जो है वो है secular. Even the works in science are rooted in religion. The rich ancient literature comprises the Vedas, the Upanishads, the Brahmanas, and the Aryankas, the Purans, the Mahabharata, the Ramayana. The Jatak tales, Tripitakas, Angas and Sangam literature. अब जो हमारा ये जो rich ancient literature है उसमें क्या क्या है ये सब चीजें उस literature में हैं. The Rig Veda is the oldest of all. In the previous chapter also we have read कि जो Rig Veda है वो सबसे पुराना है. The Vedas. The word Veda means knowledge. Veda का मतलब होता है knowledge. There are 4 Vedas. The Rig Veda, the Sam Veda, the Yajur Veda and the Atharva Veda. The Rig Veda is the oldest of all. The Brahmanas are a prose commentary on the Vedic hymns, the Samhitas. Vedic hymns पे prose commentary है, वो किसमें है? The Brahmanas. The Aryankas and Upanishads. These two embody the philosophical meditations of the learned sages of God, the soul and the world. अब ये जो आर्यंकास और उपनिषद्स हैं इसमें philosophical meditations mention की गई है किसकी? जो learned sages थे उन्होंने God पे, soul पे और world पे जो भी meditation किया है, जो भी work किया है, that those things are there in the Aryankas and the Upanishads. The Vedangas. There are 6 Vedants like phonetics, astronomy, ritual, grammar, etymology and metrics. These help to understand the Vedas. इन सब चीजों से Vedas के बारे में knowledge मिलती. The Sutras. These are like a handbook of the various branches of Vedic knowledge. Vedic knowledge के बारे में अगर वैदिक जानकारी लेनी है तो ये जो सूत्रास हैं ये हैंडबुक की तरह वर्क करते हैं. Now the fact to know, the Manusmriti was composed between 200 BC and 200 AD. The other Smritis must have been written after that period. जो मनुस्मृति है वो तो इस टाइम पीरियड के बीच में लिखी गई थी और जो बाकी स्मृतिस हैं उनको इसके बाद लिखा गया. The Purans. There are a total of 18 Purans. Each of them, 18 Purans हैं. Each of them divided into 5 parts. Purans are 18 and हर एक पुराण जो है वो 5 parts में divided. They belong to the latest product literature. From the viewpoint of history, the 5th part is important as it throws valuable light on history. जो पुराण को जो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हर एक पुराण को उसका जो 5th पार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. The important Purans from the viewpoint of history are the Vishnu Puran. अब कौन कौन से पुराण जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से हैं? विष्णु पुराण, the Vayu Puran and the Matsya Puran, the Brahma and the Bhanisya. They cite the names of different dynasties like Purus. अब इनसे अलग अलग डायनेस्टीज का पता चलता है. कौन कौन से? Purus, Nandas, Mauryas, Kushanas, along with the names of towns, regions,
mountains and rivers. The 18 Purans are as follows. तो अब 18 पुराण कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, वयान पुराण, भगवत पुराण, नरादीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नेय पुराण, भविष्य पुराण, then ब्रह्मवानिस्त्र पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामना पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण and Brahmananda Puran. These are the 18 Purans. Now we'll read about the epics. अब epics कौन से हैं? Two great epics are the Mahabharata by Ved Vyas and the Ramayana by Valmiki. Are very valuable because they continue to influence life even in the present times. ये जो दो epics हैं महाभारत और रामायण, ये आज भी हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. प्रेजेंट टाइम्स में भी इनकी जो टीचिंग्स हैं वो आज भी काम करती है. दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो द कंडीशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी इन दोज डेज. उस टाइम पे जो लाइफ की कंडीशन थी और जो सोसाइटी का हाल था उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देते हैं. They give vivid account of the extent of empires and the relations and battles among kingdoms. They tell us that the women enjoyed a respectable position in the society. उस टाइम पे ये महाभारत और रामायण हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो women's का position था वो बहुत respectable. While they were prevalent, the evils of polygamy and gambling. Buddhist and Jain texts. The Buddhist literature flourished during the ancient period. Ancient period में Buddhist literature ने बहुत flourish किया. The Tripitakas and the Jatak tales were composed during this time. अब इस टाइम पे क्या क्या कंपोज की गई थी? Tripitakas और Jatak tales. Similarly, the Jain text Angas provided valuable historical information about the prevailing times. They help to reconstruct history और इनके help से history को reconstruct किया जा सकता है. Next comes the Sanskrit and other texts. The Sanskrit literature flourished during the ancient period. Ancient period में Sanskrit literature ने भी बहुत flourish की. Kalidasa wrote a number of plays. कालिदास ने बहुत सारे plays लिखे like Abhigyan Shakuntalam, Vikramavashi and Malvikagnimitra. Epics like Raghuvansham and lyrics like Ritu Samhara and Meghduta. ये सब कालिदास ने. These works also provide important information about the ancient period. Ancient period के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें इनसे मिलती है. In addition to these, a number of other works were written during this period. और भी बहुत सारे works लिखे गए थे इस टाइम पे. The Mudra Rakshas by Vishaka Datta, Amarkosha by Amar Singh and Mrichakatikam by Shudraka and Panchtatra by Vishnu Sharma are important of them. The Ashtadhyayi by Panini and the Arthashastra by Chanakya are fine works of literature on grammar and politics respectively. अब ये जो अष्टध्यायी है जो पाणिनि ने लिखा और जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, ये बहुत फाइन वर्क है. इसमें लिटरेचर का ग्रामर पे, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स दोनों चीजों का बहुत अच्छा वर्णन है. Now comes the Sangam literature. Tamil flourished in South India. As we have read, हमने previous chapter में पढ़ा कि तमिल ने कहाँ फ्लरिश किया? साउथ इंडिया में. We can find the early Tamil literature in the Sangam literature. और Tamil literature कहाँ मिलता है? Sangam literature. It is an important source of history dealing with different aspects of life: social, religious, economic, and administrative. Other important pieces of Tamil literature are two epics. अब Tamil literature के जो important pieces हैं वो दो epics हैं. कौन से? Silpadikram and Manimekhi, and a poem by Thiruvalluvar, a great poet.
Thiruvalluvar was a great poet and he had written a poem. By the word Sangam meant conference or assembly. Sangam का मतलब क्या था? Conference या assembly. The three Sangams were held sometimes between 3rd century AD and 6th century AD. जो 3 संगम held किए गए थे वो कब किए गए थे? 3rd century AD and 6th century AD के बीच. The Sangam literature is an important source to know about the prevailing times. The Sangam literature also throws light on the relations with distant lands, especially the establishment of the Indian colonies in Southeast Asia by Indian traders. अब संगम लिटरेचर और भी क्या चीजें बताते हैं कि उसकी रिलेशन कैसे थे इंडिया के डिस्टेंट लैंड्स के साथ, स्पेशली और एस्टैब्लिशमेंट्स जो इंडियन कॉलोनीज का एस्टैब्लिशमेंट जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन ट्रेडर्स ने किया था वो कैसे. It also mentions trade relations with Greeks and Romans. The Sangam age produced a huge volume of Tamil poetry. उस टाइम पे बहुत सारी तमिल पोइट्रीज लिखी गई. It shows an advanced stage of Dravidian culture. ये Dravidian culture का advanced stage. The words of the first and second Sangams are now lost, except one Tamil grammar. जो first और second Sangam के जो words हैं वो खो चुके हैं, बस एक तमिल ग्रामर बचा. During the third Sangam period, literary activities reached their heights. Third Sangam के टाइम पे जो literary activities थी वो बहुत ज़्यादा होंगी. And from that period, about 2,000 poems have survived. 2,000 poems were survived. The important works of this period are Patupattu, Purananuru, and the Ekrid Koral. The rulers in all parts of India patronized literature. They gave grants and assistance to poets, writers, and scholars in different tasks. अब जितने भी रूलर्स थे साउथ इंडिया में उन्होंने लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया, उनको ग्रांट्स भी दिए. जो अच्छे पोएट्स थे, राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको ग्रांट्स भी मिले और असिस्टेंस भी दिया. नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. एंशिएंट इंडिया फ्लरिश्ड इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. अब अलग अलग आर्ट फॉर्म्स भी फ्लरिश किया एंशिएंट इंडिया. क्या क्या थे वो? पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ज्वेलरी, metal work, woodwork, and engineering. All these flourished. Men and women were fond of jewelry from the very beginning. शुरू से ही men भी और women भी वो दोनों ही बहुत jewelry उनको अच्छी लगती थी. With the passage of time, Indian craftsmen had attained expertise in designing jewelry and it was in great demand by even other countries. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी इस ज्वेलरी डिजाइनिंग में और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी दूसरी कंट्रीज में. The people used to get their wooden doors and windows carved into different patterns. अब लोग क्या करते थे, अपने जो वुडन उनके डोर्स और विंडोज थे उस पर कार्विंग करवाते थे, बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग. Many tools and showpieces too were made of wood. The paintings in the Ajanta and Ellora caves leave the visitors spellbound by their beauty and finery. If ever you get a chance to visit Ajanta and Ellora, kabhi aapko chance mile Ajanta and Ellora caves dekh ke aiyega. It has beautiful images, बहुत सुंदर सुंदर images carved हैं वहाँ पे और spellbound beauty. You will just be spellbound that which type of art and architecture was there, and they were very fond of these inscriptions and they were fond of doing the sculpture, the art in the caves. A large number of images and other inscriptions have been found which belong to the ancient period. जैसे कि अभी बताया मैंने, inscriptions भी हैं वहाँ पे, images भी हैं वहाँ. We find a number of monuments, building temples, stupas, monasteries, and other monuments belonging to the ancient period. A temple has a small central room. Temple में एक छोटा सा एक central room है. The image of the main deity is placed there. जिसको worship करते थे उसका image वहाँ पे है उस छोटे से room में. This is known as गर्भगृह.
और इसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह। जो मेन गॉड जिसकी पूजा की जाती है, जिसका वो टेम्पल होता है, वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं? एक छोटा सा रूम होता है उसके सेंटर में, कि वहां पे उनका इमेज होता है। The religious rituals were performed by the priests in the गर्भगृह, और इसी गर्भगृह में जो प्रीस्ट हैं, जो संत थे, वो लोग पूजा किया करते। See, Ajanta caves. Look at the beautiful carving here, the Ellora caves. Okay, there is a शिखर on the top of the गर्भगृह. अभी प्रीवियस चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था, जो बिल्कुल टेम्पल के टॉप पे होता था, उसे कहते थे शिखर। तो शिखर बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर होता है। Some temples in the northern India has an open space called mandap for devotees to assemble. और कुछ नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पे एक ओपन स्पेस होता है जिसे कहा जाता है मंडप, और वहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो इकट्ठा होते हैं। द दसवंतरा टेम्पल एट देवगढ़, झांसी, द टेम्पल भितरगांव at Kanpur in Uttar Pradesh, and the temple Sanchi are beautiful examples of architecture by the Gupta dynasty. अभी जब हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, then we came to know about these temples. तो ये जो temples हैं, ये beautiful example of architecture है गुप्ता डायनेस्टी। The cave temples at Ajanta are good examples of temples built during the Gupta rule. Now, metallurgy and technology. The Chalukya and the Pallavas, rulers of South India, were great patrons of art and architecture. जो चालुक्य और पल्लवा रूलर्स थे, वो बहुत ग्रेट पेट्रन्स थे किसके? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The Chalukya rulers built beautiful stone temples and cave shrines dedicated to Lord Vishnu and Lord Shiva at Patatikal, Aihole and Vatapu. इन जगहों पे चालुक्य रूलर्स ने बहुत सुंदर सुंदर स्टोन टेम्पल्स और केव श्राइन्स बनवाए। They also built a large number of Buddhist monasteries. The Rath temples at Mahabalipuram were carved out of single rock. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो एक सिंगल रॉक से कितना सुंदर वो रथ टेम्पल, बिल्कुल रथ की चैरियट की शेप का टेम्पल बनाया। This short temple at Mahabalipuram too is a famous temple built by the Pallavas. The Kailashnath temple at Kanchipuram is famous for its beautiful sculptured interiors. कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में, उसमें क्या है? अंदर बहुत सुंदर स्कल्पचर्स। The Mahabodhi temple at Bodh Gaya and the Nalanda University at Nalanda in Bihar. जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, were built by the Gupta rulers. इसे किसने बनाया था? गुप्ता रूलर्स। They are the living proofs of the marvelous ancient architecture. ये ancient architecture का एक बहुत जीता जागता एक एग्जाम्पल है, लाइव प्रूफ, लिविंग प्रूफ। Now, fact to know, Fracas of Ajanta caves are masterpiece of wall paintings representing scenes from the life of Buddha. जो बुद्धा की लाइफ थी, उसको वॉल पेंटिंग में यहाँ पे अजंता केव्स में देखा जा सकता है। Fine children, now comes the science and technology. Ancient India made much progress in science, mathematics, astronomy, medicine, metallurgy and technology. अब एंशियंट इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया किसमें? साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर फाइन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर। ये दोनों बहुत अच्छे, बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे। आर्यभट्ट wrote in his Aryabhatiya that the earth moves round the sun and rotates on its axis. ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने फाइंड आउट किया था ये कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। Aryabhatta discovered the causes of eclipses and also measured the circumference of the earth. उन्होंने eclipses के बारे में भी पता लगाया और जो circumference है अर्थ का उसके बारे में। His another book is the Surya Siddhant. The Brihad Samhita is an encyclopedia of science written by Varahamihira.
और जो बृहद संहिता है वो एक एनसाइक्लोपीडिया है साइंस का, जिसे कि वरामिला ने लिखा. They could precisely calculate astronomical movements and eclipses. Look, here's Aryabhat. The concepts of decimal system and zero were parts of the Vedic maths. और ये जो जीरो डेसिमल सिस्टम है और जीरो का जो कंसेप्ट है वो वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है. लीलावती by Bhaskaracharya is considered as the first book of modern arithmetic. Modern arithmetic की जो first book थी वो थी लीलावती by Bhaskaracharya. The Indian method of numeration was learned by Arab traders who passed it on to Europeans. This is the reason that the numerals are called Indo-Arabic system of numerals. इसको इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंडियन मेथड ऑफ न्यूमरेशन है वो अरब ट्रेडर्स ने सीखा और उन्होंने उसको यूरोपियंस को पास किया. Algebra owes its origin to Indians and the Greeks. Geometry was used in making the sacrificial pot for yajna. The acute right and obtuse angles were also known to the Indians in ancient times. और इन angles के बारे में भी ancient times में Indians को पता लगा. Now comes the medicine. The Atharva Veda mentions many herbs and diseases. जो Atharva Veda है उसमें क्या mention है? बहुत सारे herbs और बहुत सारे diseases के बारे में. Shushruta, Charak and Dhanvantri were great physicians of their time. Shushruta in his Shushruta Samhita has described the methods of operating cataract, stone disease and some other disease. जो Shushruta थे उन्होंने अपने Shushruta Samhita में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कैटरेक्ट, जो आई में कैटरेक्ट हो जाता है, स्टोन डिजीजेस के बारे में और दूसरे कई डिजीजेस के बारे में. He has even mentioned 121 implements for surgery. Similarly, the Charak Samhita was written by Charak. Charak Samhita Charak ने लिखी थी. Is a compilation of names of Indian medicines made from plants and herbs. उसमें सारे इंडियन मेडिसिन्स के नेम्स लिखे गए हैं जो कि प्लांट्स और हर्ब्स से बनते हैं. Then Brahmagupta, Vagbhat and Dhanvantri are other great physicians. The Yajurveda mentioned different methods used for diagnosing diseases and medicine. यजुर्वेदा में क्या मेंशन है कि किस तरह से डिजीज को डायग्नोस करना है और उसके मेडिसिन को. Now, fact to know, the ancient Indian system of medicine is known as Ayurveda. जो ancient system है medicine का, Indian system, उसे क्या कहा जाता है? Ayurveda, which uses herbs and plants for curing different diseases. The Indian craftsmen were adept at mixing different metals and making fine pieces of jewelries, images and tools. The Indian jewelry was made of gold, silver and stone. अब Indian jewelries जो थी वो किससे बनी थी? Gold, silver और stone. India made considerable progress in manufacturing cotton, woolen and silk garments. अब इंडिया ने और किस में प्रोग्रेस किया? क्या मैन्युफैक्चर करने में? कॉटन, वूलन और सिल्क garments. Also, several types of colors and dyes were used for these clothes. Needlework for doing embroidery too was in fashion. जो needlework था जिससे embroidery करते थे वो भी fashion में था. The pillar of Mehrauli, Delhi, is an evidence of the quality state of the metal work in the ancient times. हमने अभी previous chapter में पढ़ा था वो pillar, iron pillar of Mehrauli, Delhi. वो एक मेटल वर्क, एंशियंट टाइम के मेटल वर्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. द पिलर हैज नॉट टेकन रस्ट इवन आफ्टर ऑल दीज सेंचुरीज. इतने सेंचुरीज बाद भी वो आयरन का पिलर जो है उसमें जंग नहीं लगा. द ब्रास इमेजेस टू सब्सटेंट देयर स्टेटमेंट. नाउ चिल्ड्रन, what we have read in the chapter, let's revise it. Important facts. Rich literature was composed during the ancient period. The Veda, the epics, the Tripitakas and the Angas are rich sources of history of the ancient times. The Indian rulers in ancient times patronized arts, literature and science. They loved art, literature and science. India excelled in art, sculpture and architecture. India had touched great heights in
mathematics, astronomy and medicine in ancient times. Ancient times में ही इंडिया ने बहुत ऊंची heights ले ली थी astronomy, mathematics और medicine. Fine children, see this is the gold jewelry. Now children, let's start the exercise here. Objective type questions. Take the right option. There are a total of dash Purans. कितने पुराण? 20, 80, 18. There are 18 Purans. Take this. Varamira was the author of. Varamira ने क्या लिखा था? मेघदूतम, बृहत संहिता, अर्थशास्त्र. He wrote बृहत संहिता. The Indian jewelry was made of. Indian jewelry किस चीज से बनी थी? Gold, silver, both of these. They were made of gold, silver, both. Dash was not a medicine man. Charak, Dhanvantari, Varamira. Varamira was not a medicine man. He was an author. He was an author. Dash specialized in surgery. Surgery में किसने specialization किया था? Sushruta, Charak, Kalidas. Sushruta. Take Sushruta. Fine. Now let's do the fill in the blanks here. Rich literature was composed during the कौन से period में rich literature composed हुआ था? During the ancient period. So write down ancient period. Okay. There are a total of dash Purans. How many Purans are there? There are 18 Purans. The Tripitakas and the dash tales were composed during the ancient period. Tripitakas and the Jatak tales. The Ashtadhyayi was written by, किसने लिखा था Ashtadhyayi? It was written by Panini. So write down Panini here. Aryabhat and Dash were fine mathematicians of the ancient period. कौन थे Aryabhat और Varamira? So we write here Varaha Mihra. Varamira. Now write T for true and F for false. There are only 5 Purans. क्या केवल 5 Purans हैं? No. This is false. Write down F here. Each of the Purans is divided into 5 parts. Yes, this is true. The Mudra Rakshas was written by Shudraka. No, this is false. It was written by Vishaka Datta. Write down F here. Varamira was a medicine man from the ancient India. Was Varamira a medicine man? No. False. Surgery was not practiced in ancient India. False. Surgery was practiced. Fine, children. So, this is all in the chapter. Please go through the chapter again. Read the chapter very thoroughly and stay tuned for the new video. Let's meet again with a new chapter. Till then, have a good time. Bye.